we all are the part of the Wolfstack Solution Company, so I want to tell you about Wolfstack Solution Company first. Wolfstack Solution is a growing technology company that focuses on providing innovation, digital solution. It works in the areas like software development, web solution, digital services, and skill development. The company aims to empower individuals by creating opportunities for learning, growth, and professional improvement. Now, we formally begin today's session. Today's session is dedicated to Sayyid Usman Zahid Saab, MS Computer Science and lecturer at IT Department, NCA Lahore. With us today, he will share his valuable knowledge and guidance about IT skill and career opportunities. Now, now I would like to invite CEO Malik Awais Altaf to invite the guest speaker. Sir, it's over to you. جی السلام علیکم. Samrat, please جی mute your mic. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ Yes, sir, آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ممبران ٹیم وقت پہ جوائن کیا، اور مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت اچھے سے سیشن کو آج مینیج کیا، اور اس کے بعد سر سید عثمان زاہد صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیشہ وہ نوازش کرتے ہیں، جب بھی ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے وہ اپنا وقت جو ہے قیمتی وقت نکالتے ہیں اور ہمارے لیے سیشن کو مینیج کرتے ہیں تاکہ ہم یوتھ کو جو ہے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو کچھ سکھا سکیں، کچھ لرن کروا سکیں. تو آج بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، وولفسٹیک سولوشن کے پلیٹ فارم کی جانب سے، اپنی مینجمنٹ کی جانب سے کہ آج بھی انہوں نے اپنا وقت عنایت کیا. آپ سالوں کا تجربہ رکھتے ہیں آئی ٹی کے اندر، اور ایک پاکستان کی ایک نامور یونیورسٹی NCA اس کے اندر لیکچرار کے طور پہ اپنی خدمات سالوں سے دے رہے ہیں. تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اب آپ اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں. تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم. آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. اب میں لیکچر کا اسٹارٹ کرتا ہوں. میں پہلے سلائڈس آپ کو شیئر کر لوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ایکچولی میرا نام سید عثمان زاہد ہے، جسے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے. میں نے ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے، اور لیکچرر آئی ٹی میں اس ٹائم میں ہوں. لیکچر دیتا ہوں آئی ٹی کے حوالے سے، بیسک لیول پہ بھی ہے، ایڈوانس لیول پہ بھی ہیں، اور پرابلمس ہوتی ہیں NCA میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی ان کو آئی ٹی سے کوئی چیز چاہیے تو یا کوئی نالج چاہیے وہ میں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں. اس سے پہلے میں سپروائزر رہا ہوں NCA میں، اور ایوننگ پروگرام میں بھی میں PSDF پروگرام تھا ایک NCA کا، اس پہ بھی میں نے ان کی ٹیکنیکل سپورٹ دی آئی ٹی سے حوالے سے. اس سے پہلے میں کمپیوٹر آپریٹر تھا نیوز ایجنسی لاہور میں، اور آئی ٹی ٹیکنیشین رہا ہوں پیپلز کمپیوٹر کارپوریشنس کے. اس میں آج کل سب سے جو ایکچولی بیسکلی ہوتا ہے کہ ہم کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، اور سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو کمپیوٹر سائنس میں ہم نے ایڈمیشن لیا ہے، وہ جو ٹریک ہم نے جو پاتھ وے لیا ہے، مین کے کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر انجینئرنگ یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا ڈیٹا سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس کو جو بھی آپ کے کورس ہے اس کو اچھی طرح ریڈ کریں، اچھی طرح پڑھیں. یا ایک فیلڈ ہے، یا ہم کمپیوٹر سائنس کر لیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں جی کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہم کیسے کام کر سکتے ہیں، یا سافٹ ویئر انجینئرنگ والا آرٹیفیشیل یا ڈیٹا سائنس میں کیسے کام کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اپنی جو بھی کورس آپ کی آؤٹ لائن ہے، یا کورس جو بھی آپ سلیکٹ کرتے ہیں، آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں، ہر چیز ہر سبجیکٹ کو پڑھیں، کیونکہ ہر سبجیکٹ میں
कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि उस फील्ड के अंदर होते हैं, जैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पे भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी होगा, डाटा साइंस पे भी पढ़ाया जाएगा। और इसी तरह डाटा साइंस के हवाले से सब्जेक्ट्स हर उसमें होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया सब्जेक्ट है और हर उसमें ऐड किया गया है। तो हमने कोई भी फील्ड में काम करना हो, हम अपने अच्छी तरह सब्जेक्ट पढ़े हुए होंगे तो हम कोई भी फील्ड में जाएंगे, हम आईटी की, तो इजीली हम वो काम कर सकेंगे, या जो डिपार्टमेंट या जो भी आपके लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उस अदारे की। तो मेरा ख्याल है कि आप जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसको अच्छी तरह रीड करें, अच्छी तरह पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप कामयाब ना हो अपनी फील्ड के अंदर। बेसिकली हम आगे चलते हैं। बाकी वो जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों ने पढ़ी भी हैं, पहले भी आप इसको रीड कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से आप लोगों को आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इनपुट डाटा, आप डाटा इनपुट उसको देते हैं तो लॉजिकली डाटा मैथ की तरह कैलकुलेशंस होकर आपको आउटपुट देता है। आपके इसके पीछे जो है वो बेसिकली लैंग्वेज चल रही होती हैं। हम उसको आप उर्दू में दें चाहे इंग्लिश में आप लिखें, इन पेज उर्दू है, जैसा उनको इन पेज उर्दू में हम काम करते हैं तो उसकी कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर करता है 0 1, लेकिन जो कंपाइलर है या उसकी जो ट्रांसलेट करता है वो आपको आउटपुट पे इजीली वो वर्ड के या जो भी आप प्रोग्राम्स होगा उसमें आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसमें आप ये देखें, बेसिकली हम एक वीडियो देख लेते हैं इसके ऊपर जो एक अच्छा है। आपको बेसिकली कंप्यूटर से बुलाते हैं तो हमें कनेक्ट करना ही नहीं आ रहा होता, हम इसको चेक कर लेते हैं कैसे इसमें हम करेंगे। Are you having trouble putting your computer together? Are you feeling overwhelmed? Don't worry. Take a deep breath. We're going to show you, step by step, how to set up a desktop computer. First, unpack everything from the box and remove any plastic covering or protective tape. Think about where you want your workspace to go and how you want to arrange the different components before you start plugging things in. Next, let's connect the monitor. If you have an all-in-one computer where everything is built in, for example, an iMac, you can skip this step. Otherwise, locate your monitor cable. Newer monitors often use HDMI or USB-C connections, while older monitors may use VGA, DVI, or another type of connection. It just depends. Now find the monitor port on the back of your computer case and plug the cable in. Most cables are designed to fit a certain way, so if it's not working, don't force it. When you're done, connect the other end to your monitor. Now it's time to plug in your keyboard and mouse. If they're wired, they most likely have a USB connector, so you can use any of the ports you see here. You could also plug your mouse into the USB port on your keyboard if it has one. If you have a wireless mouse or keyboard, it's going to work a little differently. Some wireless devices connect using technology that's built into your computer, while others need an adapter. You'll also need to pair the device with your computer before you can use it. You may want to read the instructions that came with your wireless device to learn more about pairing. At this point, you can plug in your speakers or headphones. If it uses a typical audio plug, look for the green audio port on the front or back of your computer case. However, some speakers, headphones, and microphones use USB connectors. Finally, it's time to connect the power supply cables and plug the computer in. You should have two cables. One goes with your monitor, and the other plugs into the back of your computer case. Now plug both cables into a power outlet. We recommend using a surge protector to keep your equipment safe in the event of a power surge. When you're ready, plug the surge protector into a regular outlet. If it has a power switch, you may need to switch it on. That's all there is to it. Now take a minute to make sure you're happy with your workspace. Then turn your computer on. Are you having? अच्छा, बेसिकली कंप्यूटर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट CPU
इसमें जो आपने देखा होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें मदरबोर्ड्स, रैम, वीडियो ग्राफिक कार्ड और पावर सप्लाई और कूलिंग फैन होते हैं और हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है। बेसिकली हमें कंप्यूटर्स का मदरबोर्ड्स और रैम होता है। हम बेसिकली हम जो लेना चाह रहे हैं या ग्राफिकली डिज़ाइन के लिए कंप्यूटर लेना चाह रहे हैं तो हमें रैम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। रैम और ग्राफिक कार्ड होना उस पर लाजमी चाहिए। या आप गेमिंग के लिए आप लेना चाह रहे हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप या लैपटॉप, तो आप रैम उसकी ज़्यादा हो, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ हो। और मदरबोर्ड्स में आप उसकी 7 जनरेशन या 8 जनरेशन या 7 जनरेशन आप ले सकते हैं। उसमें बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में यही होते हैं। बाकी LCDs वगैरह का हम बेसिक चीज़ें ही देख रहे हैं, LCDs वगैरह भी होती हैं। बाकी अभी नेक्स्ट इसकी स्लाइड देख लेते हैं। इसमें जो बेसिकली मैं कंप्यूटर्स का ये आपको इसलिए बता रहा हूँ बेसिकली होता क्या है। जो खास तौर पर फीमेल्स होती हैं उनको पता नहीं होता कि डेस्कटॉप में अंदर उसके है क्या, तो हम इसको डिटेल से हम देखना चाह रहे थे। ठीक है, इसको देख लेते हैं, You इस may वीडियो को already देखते know हैं। that there are many important parts inside a computer, but what exactly do they do? Let's take a look inside and learn about the various components that make a computer work. Whether it's a desktop computer or a laptop, every computer has a large circuit board called a motherboard. This contains some of the most important parts of the computer, such as the CPU, also known as the central processing unit or processor. The CPU can be considered the brain of the computer because it processes information and carries out commands. Since it tends to get hot, it's covered by a piece of metal called a heatsink, which draws heat away from the processor. The motherboard also contains the computer's RAM, or random access memory. This is the short-term memory that the computer uses whenever it's performing calculations. However, you cannot store your files there, because the RAM is cleared when you shut off the computer. The hard drive provides long-term storage, keeping all of the computer's data even when it's turned off. Many hard drives use a magnetic platter to store data, but many newer computers have solid-state drives, which are faster and more durable, but also more expensive. On many desktop computers, the motherboard has expansion slots that allow you to upgrade by adding expansion cards. You can add a video card to get better graphics performance, or you can add a wireless card to connect to your wireless home network. Most laptops, however, don't have expansion slots. Of course, the computer's components need electricity to run. The power supply unit is designed to take power from the wall outlet and send it to all of the different components that need power. Laptops also contain a built-in battery that lets you use them anywhere. A computer is a pretty complex machine, but now that you've seen what goes on inside, it should be a little less mysterious. You may already अच्छा, बेसिकली कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में हम देख रहे हैं तो हम कंप्यूटर्स परचेज करते हैं या हम डिग्री भी कर लेते हैं तो हमें केबल्स का पता ही नहीं होता। इसमें डिस्प्ले केबल्स में वीजे केबल्स आती है, डीवीआई केबल आती है। जिस तरह आप ये स्क्रीन में देख रहे होंगे आपके सामने, मैंने उसके ऊपर जो डीवीआई केबल है या वीजे केबल है उसके तस्वीर भी इस पर लगाई हुई है। डीवी केबल भी है, HDMI केबल्स है, इंटरनेट केबल है और इसमें ऑडियो केबल्स भी होती हैं जो ऑडियो के लिए होती है। HDMI भी केबल वीडियो ऑडियो दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंटरनेट केबल जो बेसिकली है वो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे RJ45 कनेक्टर भी लगा होता है। बेसिकली ये आपको इंटरनेट केबल्स के आगे है जो कनेक्टर लगा हुआ है, RJ45 लगा हुआ है। इस कनेक्टर को RJ45 कहते हैं। इसमें 8 केबल होती हैं। अच्छा, USB केबल्स में हम USB पोर्ट पे लगाएंगे। इस तरह पावर केबल्स है। पावर केबल्स कौन सी होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं। बेसिकली लैपटॉप्स की पावर चार्जर होगा और मुख्तलिफ किस्म की केबल्स इस्तेमाल की जाएंगी। इसी तरह इंटरनेट केबल्स का आपको मैंने बता दिया। ये केबल्स का हमें डिटेल से मालूम होना चाहिए और ये केबल्स उसी पोर्ट पे लगेगी जो कि आपकी केबल के आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप पे पोर्ट्स हैं आपके ऊपर। इसकी केबल्स के बारे में हम देख लेते हैं वीडियो जो बेसिकली है। Every computer has its own set of buttons and ports. In this video, we're going to talk about some of the most common ones, including what they're for and how to recognize them. Some buttons are universal, like the power button. Depending on the type of computer you have, it may be on the front, on the back, behind
behind the screen, or even on the inside when you open the lid. The power socket is where you'll connect the power cord. If you have a laptop, you'll have a charging port instead. Most computers provide more than one USB port, so you can plug in any device you might need. Keyboards, printers, and USB drives are all common examples. Some computers even have USB-C ports, which can be used for many different things, not just plugging in devices. Laptops, for instance, often use the format for the charging port. If you have a desktop, you'll use the monitor port to connect the monitor. There are quite a few types of monitor connections, ranging from HDMI to the USB-C style we just mentioned. If you have a laptop, you can connect a separate monitor as long as you have the right equipment. Just look for the display port and plug in the appropriate cable. The Ethernet port lets you connect to the internet if you're not using Wi-Fi. All you need is an Ethernet cable, which you can then connect to your modem or router. If your computer has an audio jack, you can use it to plug in wired headphones or speakers. You may or may not have a disk drive, depending on how old your computer is and who makes it. The disk drive can be used to insert a CD, a DVD, or a Blu-ray disc. If you have ports that look like this, they're for older peripherals like mice, keyboards, and printers. Newer versions of these devices usually connect via USB or wirelessly. That covers the basics of buttons and ports. Of course, every computer is different, and technology is always changing. To find out what options you have, take a closer look at your computer. Every computer. अच्छा, हमने पोर्ट्स, कंप्यूटर्स की पोर्ट्स और उसके बारे में देख लिया. अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम इजीली हम काम कर सकते हैं. जो आपको पहले डॉस होती थी जो काफ़ी मुश्किल होती थी, जिसमें आप CMD लिखें तो आपको वो कमांड्स आपको डायरेक्टली देखना, फोल्डर्स बनाना, वो उस पर बहुत मुश्किल होता था. जब से विंडो आई तो आसान हो गया. अब विंडो के लिहाज से देखा जाए तो बहुत से काफ़ी हैं. विंडो 10 थी, अब 10 है, 11 है. अब इससे पहले 95 जो जिस दौर में इनके वर्जन आते रहे मुख्तलिफ किस्म के, वो उस टाइम यूज़ होती रही. इसमें आप देखें विंडोज़ है, मैक OS है, यूनिक्स है, लिनक्स है, एक्स्ट्रा मोबाइल्स की ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसे एंड्रॉयड बोलते हैं. तो ये आप बेसिकली आप इस्तेमाल यूज़ भी कर रहे हैं. जिस तरह का आप सॉफ्टवेयर चाहे यूज़ करते थे, यूनिक लिनक्स में ही कुछ सॉफ्टवेयर्स बने हुए होते हैं. ये प्रोग्राम्स बनाए आपके लिए होते हैं कि इजीली आप इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकें. इसमें हम वीडियो एक देख लेते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है. Did you know that you and your computer speak different languages? It doesn't speak Spanish or Swedish or Chinese. It speaks in ones and zeros. You can't communicate directly with your computer, but that's where your operating system comes in. The operating system, or OS, is the program that lets you interact with your computer. Together, the operating system and computer hardware form a complete system that determines what your computer can do. Two of the most common ones are Microsoft Windows and Mac OS. Windows comes preloaded on most personal computers, while Mac OS runs on all new Macs. Operating systems aren't just for desktop and laptop computers. Mobile devices run mobile operating systems, like Apple iOS or Google Android, which are designed for interactions with smaller touchscreens. Before downloading a new program or application, be aware that it may not be available for your operating system. Some applications work on all devices, while others only work on certain ones. So get to know your operating system to see how it works and what it can do. अच्छा, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देख ली है. अब डाटा क्या होता है? डाटा आप किसी जिस तरह हम यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है. अब हमारे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, जिस तरह स्टूडेंट्स का नेम है, फादर नेम्स हैं, इसी तरह उसकी फ़ोटो है या उसका जो भी उसका एड्रेस है.
तो वो हमारे पास किसी ऐसे पेज पे लिखा है, तो वो हम उसको डाटा को कलेक्शन करने के लिए हम अगर कंप्यूटर में करेंगे, कलेक्शन करेंगे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का, तो हमारे पास वो डाटा एक तरह से आ जाएगा। अब उसी को हम डाटे को हम एक अपने कंप्यूटर्स के ऊपर कर सकते हैं। डाटा मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स आपके हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की साउंड के हवाले से या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप प्रोसेस कर सकें। प्रोसेस जब आप करेंगे तो उसका आपको इंफॉर्मेशंस मिल जाएगी। इंफॉर्मेशंस आपके पास आ गई। अब जैसा कोई स्टूडेंट्स का हम रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, जैसा कंप्यूटर साइंस में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स का या डाटा साइंस वालों का निकालना चाहते हैं, तो हम वन क्लिक से हम उस स्टूडेंट्स का जो सॉफ्टवेयर है उसे हम निकाल सकते हैं। एक्सेल से भी निकाल सकते हैं या दूसरे हमारे CMS होते हैं उससे भी डाटा निकल आता है, तो हमारे ईजी होता है इंफॉर्मेशन निकालना। अभी हम इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं। हार्डवेयर क्या है, जिससे हम बेसिकली प्रिंटर, मॉनिटर, आपकी हार्ड डिस्क वगैरह जो लैपटॉप्स है बेसिकली जिसको हम हाथ लगा सकते हैं या पकड़ सकते हैं, वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे आपके प्रोग्राम्स हो गए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जिसमें गेम्स हो गई, आपका एक्सेल, पावर पॉइंट या इसी तरह के क्रोम हो गए, गूगल क्रोम हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। अच्छा, इनपुट डिवाइस में हम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हम यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइस से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, इस तरह मुख्तलिफ बार कोड रीडर हो गया, हमारा टच स्क्रीन और जॉयस्टिक और वेब कैम, माइक्रोफोन भी, ये बेसिकली इनपुट डिवाइसेस में आता है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास जो आउटपुट आएगी, जो कंप्यूटर्स हमें आउटपुट देगा, वो मॉनिटर्स हैं जिसमें हम स्क्रीन्स पे हम देख रहे हैं वो आउटपुट हमें आ रही है। प्रिंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं, इसी तरह प्लॉटर भी है, प्लॉटर से बड़े प्रिंट्स निकलते हैं। इसी तरह प्रोजेक्टर और GPS डिवाइसेस वगैरह आउटपुट हम इसमें ले सकते हैं। हम इसमें एक वीडियोस देख लेते हैं। There are many different types of computers, but they all use similar parts to operate. In this video, we're going to show you what these parts are and what they're used for, starting with a standard desktop model. The computer case holds the main components of the computer. This is where the actual processing happens. Today, most cases are what we call tower cases, which means they stand up vertically, but they can also come in other shapes and sizes. To view things on your computer, you'll need a monitor. The monitor uses the video processor inside your computer case to display images, text, and other content. Most monitors have an LCD or LED display, both of which are very thin so they don't take up much space. All-in-one models are even more compact since they combine the monitor and the computer case into a single unit. To interact with your computer, you'll need a keyboard and a mouse. Keyboards come in many different styles, including wireless and ergonomic. The mouse is used to control the mouse pointer on the screen, so you can click and interact with your computer. Most mice detect movement using an optical sensor on the bottom. Underneath, you'll find a small electronic eye. Laptops combine all of these things into one. That includes the components that are normally inside the computer case, plus a built-in screen, keyboard, and touchpad. The touchpad is a small touch-sensitive area that takes the place of a traditional mouse. It lets you control the mouse pointer using a drawing motion with your finger. Laptops offer the best of both worlds when it comes to portability. You can use them on the go thanks to the built-in battery, or you can connect a separate monitor, keyboard, and mouse, effectively turning your laptop into a desktop. So those are the basic parts of any computer setup. As you can see, each part plays an important role, which you'll come to understand
as you spend more and more time with your computer. अच्छा, हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और हमने देख लिया कंप्यूटर्स के बारे में, हमने काफ़ी देखा। अच्छा, ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्यूटर वायरस के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर में वायरस के बारे में हम ये देखना चाहेंगे कि कंप्यूटर पर आप लगाते हैं यूएसबी, अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास वायरस कहाँ से आता है। आप कभी भी कंप्यूटर में जब आप या लैपटॉप में अपनी यूएसबी लगाएं तो एंटीवायरस इंस्टॉल जरूर हुआ हुआ। वैसे तो अपना विंडो का अपना डिफेंस सिस्टम होता है, ये डिफेंसर होता है, कंप्यूटर में वो इंस्टॉल किया होता है। तो एवीजी कर लें या दूसरे एंटीवायरस कर लें, उससे ये होगा आपकी यूएसबी से, किसी की यूएसबी से आप कंप्यूटर पे लगाए और अपने लैपटॉप पे लगाते हैं तो डाटा आप वो डिटेक्ट करेगा और आप उसको मीन के स्कैन कर लें और वायरस जो है आपके लैपटॉप पे नहीं आएगा। बाकी इंटरनेट से भी वायरस आ जाता है, जिस तरह कोई वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, आप जब क्लिक करते हैं तो उससे भी वायरस आ सकता है। और ईमेल ऐसी बात का होता है, आपको ईमेल आ जाए जो आपको पता नहीं किसने भेजी है, वो उसको भी क्लिक ना करें आप ईमेल्स को। बाकी आप सिक्योरिटी के हवाले से एंटीवायरस आप इस पर इंस्टॉल कर लें तो आप सेफ रह सकते हैं। और पासवर्ड के बारे में बात करूंगा तो पासवर्ड आप सेम अपने नेम्स के साथ ना रखें या 1 2 3 ना रखें, मुख्तलिफ किस्म के अल्फ़ाबेट यूज़ करें और अपने मोबाइल पे कभी भी सेव ना करें, ना कंप्यूटर में आप कभी सेव करें, वो आपके जहन में होना चाहिए। बात ये होता है आपके कंप्यूटर से या हैकर जो है वो हैक कर ले तो आपका पासवर्ड, चाहे वो ईमेल पासवर्ड हो या कोई ऐसा पासवर्ड हो या बास का एटीएम मशीन्स के पिन कोड हमने रखे हुए होते हैं, याद ना रहे हैं तो हम नोट पैड या किस्म की जगह पे हम सेव कर लेते हैं, वो ऐसा ना किया करें क्योंकि बेसिकली वो हैक हो सकता है। इसमें हम वीडियो देख लेते हैं। We rely on our computers for many different things. We trust them to keep our information safe, including our files and personal data. That's why it's important to protect your computer and do your best to keep it running smoothly. Here are some tips that can help. One of the biggest threats to computer safety is malware. Malware is any type of software that's designed to damage your computer or gain unauthorized access to your personal info. This can include viruses, spyware, Trojan horses, and other malicious software. Windows computers, Macs, and even Chromebooks can get malware. To protect your computer, you should use an antivirus program like Kaspersky, Norton, or the built-in Windows Defender. This helps prevent viruses from being installed and also lets you scan your computer and remove any viruses that are found. Keep in mind, no antivirus program is perfect. To stay safe, you should still avoid suspicious-looking ads or downloads. Run regular updates to your antivirus program and also run updates to your operating system. To keep your computer running smoothly, the latest version of Windows offers a couple useful features, including storage sense and defragment and optimize drives. You can access both of these in settings, or you can find them using the search bar. When you turn it on, Storage Sense helps you free up space on your hard drive by scanning for temporary files and other files that can be deleted. Once on, it will run automatically in the background. Older versions of Windows offer a similar feature called Disk Cleanup. Defragment and optimize drives rearranges the data on your hard drive to help your computer run faster and more efficiently. It should be running automatically on a weekly basis, so you can easily check or change the schedule anytime. If something bad does happen to your computer, you could lose all of your important files. To prevent this, you should back up your computer regularly. One option is to buy an external hard drive and copy your files to it. To make this process even easier, you can use software like Windows Backup or Time Machine if you're using a Mac. Of course, if something happens to your computer and your backup drive, you'll still lose all of your files. For more security, you can use an online backup service like iDrive or Carbonite. You may have to pay a monthly fee to use these services,
but the advantage is that your files will stay safe in the cloud, no matter what happens to your computer. Following these tips can help you protect your computer and keep your information safe. You can rest easy knowing that all of your files will be there when you need them. अच्छा, अब बेसिकली हमने ये देख लिया पीछे। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर को क्लीन कैसे रखें। बास का कंप्यूटर में हम अपने कीबोर्ड वगैरह को बिल्कुल साफ नहीं रखा होता या बिल्कुल गंदा होता है, या हम चाय वगैरह या ऐसी चीज़ कुछ खा रहे हैं या मुख्तलिफ किस्म के बिस्किट वगैरह हम इसके ऊपर गिरते रहते हैं, और वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स कीबोर्ड या लैपटॉप के अंदर जाते हैं और वो ख़राब हो जाता है। तो हमने इसको क्लीन कैसे करना है, माउस को या मुख्तलिफ स्क्रीन्स वगैरह को, तो उसको आप ज़रूर क्लीन रखें। आप इसकी वीडियोस देख लेते हैं हम। It's important to keep your computer clean. Not just because it looks nice, but because things like dust and dirt can affect your computer's performance. There's a right way and a wrong way to do it. We're going to show you the right way to clean your computer. First, turn off or unplug any item before you clean it, just to be safe. To clean your keyboard, turn it upside down and gently shake to remove any dirt, crumbs, or other debris. You can also use a can of compressed air to really get between the keys. To clean the surface, use a cotton cloth or Q-tip that's been moistened with rubbing alcohol. Never pour alcohol or any other liquid directly onto your keyboard. If you spill something by accident, don't panic. Turn off or unplug the keyboard, then leave it upside down to drain. If you're dealing with a laptop spill, shut down completely and follow the same steps. Modern mice don't require much cleaning because they don't have a lot of moving parts. Just keep an eye on the sensor underneath. If anything gets stuck here, even a tiny piece of dust, it can keep your mouse from working smoothly. When cleaning your screen, avoid household cleaners like Windex and disinfectant wipes. Also, never spray the screen directly. It can leak inside and damage the components. The safest method is to shut down or unplug your computer, then wipe the screen with a cotton or microfiber cloth. For heavier cleaning, moisten the cloth with water. For outer surfaces like the case and monitor housing, it's okay to use glass cleaner. You can also make your own cleaning solution by mixing equal parts vinegar and water. Just remember not to spray your equipment directly. Spray a cloth or paper towel first, then gently wipe. Don't forget to check the back of your case, which can get pretty dusty. If you see any buildup in the ventilation fans, use a can of compressed air to clean them out. Finally, pay attention to airflow around your computer. That means no books, no clutter, nothing that might block the ventilation fans, which are designed to keep your computer from overheating. If you have a fanless computer, it's best to have airflow around the entire unit. A clean computer is a happy computer. Remember to clean your computer regularly, and it's sure to stay healthy for years to come. अच्छा, बेसिकली हम इंटरनेट के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेट आप सब इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली पहले तो बहुत कॉस्टली होता था जब हम बैचलर कंप्यूटर साइंस में जब कर रहा था, अब तो काफ़ी सस्ता हो चुका है। अब ये आप इंटरनेट क्या है, पूरे आप कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। अगर नेट ना हो तो हमारी दुनिया उदास हो जाती है बेसिकली, क्योंकि यूट्यूब से हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो इंटरनेट अब हर कोई यूज़ कर रहा है। तो अब बच्चे को भी बताया कि इंटरनेट पे हम वीडियो कार्टून्स वगैरह यूट्यूब में देखने को कैसे देख सकते हैं। इसकी भी एक से वीडियो है, वो मैं आपको चेक दिखाता हूँ। There are lots of reasons to set up a home internet connection. For example, you'll have access to email, news, shopping, TV shows, and much more. And once you have a working internet connection, you can create a wireless home network, which will let your whole family connect their computers, smartphones, and other internet-ready devices. Let's look at a few different types of internet connections that you can have. Dial-up connects to your phone line. It's usually much slower than other types of internet connections, but in some areas, it may be the only option available. Generally, DSL and cable are better options. DSL plugs into your phone line, and
cable uses your cable TV connection. These are both known as broadband internet connections because they offer much faster speeds than dial-up. This makes it easier to watch videos, play games, or browse the web. Fiber is the fastest type of broadband currently available. Using fiber optic cables, it can provide speeds that exceed even DSL or cable. However, it may not be available where you live, and it tends to be more expensive. Cellular is sold under a few different names, including 4G, LTE, and 5G. They're types of wireless internet connections often used by smartphones, but you can also get these types of connections for your home. Depending on where you live, a cellular connection may be a good broadband alternative. No matter what kind of internet service you choose, you'll need to purchase it from an internet service provider, or ISP. Chances are you can buy internet service from your phone or cable company, or you may want to shop around for a better price. Your ISP will guide you through the entire process of connecting to the internet. They will usually need to send a technician to your home to turn on your connection. Your ISP may also give you a modem and set it up for you. But if you prefer, you can buy a modem from a computer store and use the included instructions to set it up yourself. These instructions will vary, but the basic idea is that you'll connect the modem to your phone jack or cable TV connection, and then connect your computer to the modem using an Ethernet cable. Once you have everything set up, you can open your web browser and begin using the internet. If you want to connect several devices to the internet, you can create a wireless home network, also known as a Wi-Fi network. To do this, you'll need a wireless router, which takes the internet connection from your modem and broadcasts it throughout your home. Your modem may already have a wireless router built in, so you may not need to buy one. To set up your wireless connection, follow the instructions included with your router. You'll need to choose a network name, also known as an SSID. Also, for security, you should turn on WPA2 or WPA3 encryption, depending on what your router supports. Then, make sure you choose a strong password. After you've set up your wireless network, go into each device's Wi-Fi or network settings, select your network name, and type your password. If any of your devices are not wireless ready, you can simply plug them into your router with an Ethernet cable, or you can purchase a wireless card. Setting up an internet connection and Wi-Fi network takes a little bit of work, but once you get it set up, your family will be able to use the internet without being limited to one computer. There are lots of अच्छा बेसिकली हम इंटरनेट देख रहे थे इंटरनेट जो हमें आईएसपी प्रोवाइड के जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है वो कहाँ से आता है बेसिकली वो सर्वर्स मशीन्स हैं जो एक बड़े कंप्यूटर्स टाइप होते हैं वो उस पर लगा होता है ये बड़ी स्पीडली से काम कर रहे होते हैं तो ये आप देख रहे होंगे जैसे देखिए तस्वीर में ये सर्वर्स लगे ये सर्वर्स के डिजिटल टाइप भी हो सकता है मुख्तलिफ किस्म के कंट्रीज में लगे होते हैं मतलब लाहौर में है लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा होंगे तो ये सर्वर मशीन्स में डाटा आपकी हर कंप्यूटर से कनेक्ट हुए हुए होते हैं जो आप जैसा गूगल्स के हैं मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स हैं वो उनकी यानी कि उन कंट्रीज में पड़े हुए हैं और वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं इनकी मशीन्स इस पे हम देख लेते हैं वीडियो Change the world in ways never imagined. But what exactly is it? The internet is a global network made up of billions of computers. These computers are communicating with each other, allowing people to share information in a variety of ways. The internet operates through physical cables. Even wireless connections rely on these cables in order to access the global network. When you visit a website, your computer sends a request over the cables to a server. A server is where data, like websites, are stored, and it works a lot like your computer. Once the request arrives, the server retrieves the website and sends the correct data or information back to your computer or device. The data might be text, images, videos, you name it. For all of the amazing things it can do,
like cyberbullying, privacy concerns, fraud, and other challenges come with the territory. It's hard to predict how any technology will evolve. But one thing we know for sure is that the internet is here to stay. This web of connection is a powerful thing, and it will continue to transform the world as we know it. Thank you so much, sir, for this amazing lecture. And I hope, dear internees, you all have learned a lot from this session. It's time to say goodbye to you. We will meet soon in tomorrow's session. Thank you. Allah Hafiz. जी जिंकू अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू.